It's a beautiful morning, and we are on a top of a majestic mountain. It's very relaxing, especially when the gusts of the pure air mix with the heat of the rising sun touches the body. There is a temple on this mountain dedicated to a serpent deity called Jammu. According to the local tales, Jammu has three more brothers, and all of them are linked to a remote village called Himgiri. Himgiri is located in the Churak constituency of the Himachal Pradesh. It has been said that Takshak Nag had a daughter called Anjani and she had four children, and Jammu is one of them. Their story is quite interesting. You can listen it on the Him Darshanira YouTube channel. The link is in the description. Talking of the journey, we climbed up here yesterday evening and camped here for the whole night enjoying the bonfire. Usually there are people who come from the Gujjar community live here on this mountain, but yesterday no one was here. There is a dense forest around which sustains leopards, bears, and so many wild animals. To keep us safe in the night, we had to build a fire and keep it up till the morning. It was an interesting journey. You should watch it. Let's begin. Jumhaar is around 10 kilometers away from the main town of Chamba. And the way to Jumhaar is same as the Chamunda temple road. The only difference is that you keep following the road after you reach the Chamunda temple. It's a two-lane road and is dangerous at some points. The road conditions are good thanks to the government. However, there is a need of crash barriers at some delicate points. You can reach Jumhaar in any kind of vehicle. Even HRTC also provided service on this route. The road feels like constantly climbing the mountains to the top. This journey is full of scenic views. You can watch the full journey on the YouTube channel Ride Along CBA. The link is in the description. Speaking of Ride Along CBA, I am accompanied with my friend Sahil, who is a motovlogger and owns the YouTube channel Ride Along CBA. We have reached Jumhaar. It's a quiet place and an offbeat destination in Chamba district.
There are shops where you can purchase fast food, traditional dal chawal, and even you can get a hotel to stay as well. As you go up on the mountains, the view becomes scenic and the availability of water drops. So in 2011, the then Chief Minister of Himachal Pradesh, Professor Prem Kumar Dhumal, inaugurated the drought drinking water scheme here and the surrounding villages like Uti, Luddu, and Wat. The way to Jammu temple starts from the village called Agahar, which is the end of the road. No vehicles can go beyond Agahar. It's 1:49 p.m. and we have reached Agahar. We will trek on the above mountain and follow its top trails to the another mountain behind. We will cross 2 mountain tops in total and the third one is our destination. It's been an hour since we are trekking and the trek is little difficult. We can feel the sounds of nature. However, we have to hurry because the weather is getting worse and we have to cover a huge distance. We have come all the way from down there. We are almost there, but the rain can start any minute. And it was expected. The rain had started with the small white ice walls falling on us from the top. It's another way to welcome and we appreciate the nature for this rain. आके हमने अभी सामान रखा था और लकड़ी लेने के लिए गए थे और एकदम से बारिश चालू हो गई और बारिश के साथ में ओलावृष्टि भी शुरू हो गई और हमारे सारे बैग भीग गए और हम भी भीग गए। अब लगता है कि वैसे तो हम लोग साथ में टेंट लेकर आए थे लेकिन अब जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब ये जो कोठे हैं गुजरों के हम लोग यहीं पे शायद आज अपना नाइट स्टे करेंगे। ये तो सच में एडवेंचर हो गया ब्रो। हाउ आर यू फीलिंग ब्रो? इसीलिए आए थे भाई बट ये एक्सट्रीम हो गया। We have decided to camp inside an open cowshed built by the people from the Gujar community who live here but not here right now. The fire has started and we can now take a little breath and enjoy the nature. It's adventurous and scary at the same time because there is no one else here but us. This is how God turns a normal expedition into an extreme one, but we will survive. जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे
हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके थे जहाँ से वापस जाना पॉसिबल नहीं था। तो साहिल एक स्टोरी बताने लगा। उसने कहा कि कल यार मैंने ना एक स्टोरी देखी, उसमें यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, और उसमें 2 लोग जो है वो कैंपिंग करने के लिए कहीं पहाड़ पे गए थे, और नेक्स्ट डे वहाँ पे जो फॉरेस्ट के जो पेट्रोलिंग वाले ऑफिसर्स होते हैं वो लोग अपनी पेट्रोलिंग पे जा रहे थे। तो जब वो अपने बायनोकुलर्स से देख रहे थे तो उन्हें जिस पहाड़ पे वो लड़के कैंपिंग करने के लिए गए थे 2 फ्रेंड्स, तो वहाँ पे उनको वो टेंट दिखा, और टेंट के बाहर उनको एक जो जो उनमें बॉडी से दिखी जो उनको, एक, ऐसे हाँ लेटा हुआ था, जैसे कोई हाँ लेटा हुआ है। हाँ हाँ वो ऐसे जंगल में, मतलब उनको लगा कि कुछ गलत तो नहीं हो गया कुछ, तो वो चेक करने के लिए चले गए। तो भाई सही बात है। तो जब वो वहां पे गए, मतलब हंसने की बात तो नहीं है ये, बट हंसी इस बात पे आ रही है कि जिस पॉइंट पे आके मैंने इसको ये बात बताई, मतलब कल रात का देखा था वीडियो, बट मैंने इसे बिल्कुल नहीं बताया, उस पॉइंट पे आके बताया, उस बात पे हंसी आ रही है। तो जब उन्होंने देखा तो सारी बॉडी वैसी की वैसी थी, एक्सेप्ट बस गर्दन के ऊपर सर उसका गायब था। उसके बाद उन्होंने टेंट में जब जाके देखा तो एक और पर्सन था, वो 2 लोग थे। तो दूसरे पर्सन का भी वैसे ही बॉडी पूरी की पूरी वहाँ पे, और उसका हेड नहीं था। मतलब उसके बाद उन्होंने काफ़ी सर्च किया, इनफैक्ट काफ़ी दिनों तक सर्च करते रहे वो, बट उनको उनके जो सर नहीं मिले, वो नहीं मिले, सिर्फ वो बॉडीज़ थी। और वो 2 दोस्त कैंपिंग करने गए हुए थे, तो वो मैंने इसे बताया ऐसे पॉइंट पे, तो मतलब बड़ी ना वियर्ड सी ना लुक दे रहा था ये मुझे। और ना ना वापिस जाने, ना वहां से वापिस जा सकते थे, और आगे बढ़ने में भी डर लग रहा था क्योंकि हम भी 2 थे जाने। रिएक्शन ये, मतलब फनी थिंग वाज कि ये मुझे देख रहा है कि मतलब अभी क्यों बता रहा है, हम भी सुबह अरे सुबह से निकले थे, और ये बंदा मेरे को, मतलब शाम होने वाली थी, ये बंदा मेरे को तब बता रहा था कि भाई ऐसे ऐसा सीन भी था। भाई मजा ही नहीं आता पहले बताता तो चाहे ट्रिप ही कैंसिल कर देते। भाई सही बात है भाई, बनता है भाई, जान के और साथ मतलब बेइज्जती वहाँ है। पे उन्होंने बताया था कि मतलब वो जिस हम्म, एरिया में गए थे वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए काफी फेमस है, तो तब भी वो वहाँ पे गए थे। ये तो नहीं है पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए फेमस, क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर भी है। कल सुबह जब उठेंगे तो आपको उस मंदिर की स्टोरी भी बताएंगे, और वो मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे। तो जिस लोकेशन पे हम लोग आए हैं, इसको बड़ी जुमार क्यों कहते हैं वो भी आपको बताएंगे, और इसको जम्मू नाग भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जम्मू नाग का टेम्पल भी है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि पिछले व्लॉग में जब लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हम लोग आपको वो स्टोरी नहीं बता पाए थे, तो इसलिए यहाँ पे इस बार हम दोबारा से आए हैं, और जो कोशिश, कुछ भी बचा हाँ था पिछली बार, मतलब वो सब कवर करेंगे इस हाँ बार। कवर करेंगे इस बार। सही बात है, थोड़ा सा लोकेशन को भी पूरे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, और सुबह के 6 बज रहे हैं और धूप भी निकलना शुरू हो गई है। कल रात को तो मौसम साफ़ था, लेकिन शाम के वक्त बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। तो काफ़ी दिक्कत आई आग जलाने में, लेकिन सब कुछ हो गया। अब आपको थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे आसपास का। इस वक्त हम लोग बिल्कुल टॉप पर हैं पहाड़ के, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, और आसपास के पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी है, और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ठंडी हवा चल रही है, एकदम फ्रेश, मज़ा आ रहा है। आपको अभी थोड़ी देर में मंदिर भी दिखाएंगे और उस मंदिर की विशेषता भी बताएंगे। This is an experience, one of its kind we can never forget. The question is what we are taking back. We are taking back a lot of things. The courage, confidence, and survival skills is one of them.